नमस्कार, बैठिए। One of our ancient rishis has said, Vedat sarvam prasiddhyati. That means Ved is the source of eternal, endless knowledge for all sciences, for the entire humanity. Vedic mathematics is a very important aspect of the knowledge of Vedas. Yesterday, we introduced ourselves to the very important vinculum approach of Vedic maths, and we have seen in vinculum numbers we use both positive as well as negative digits. We take the digit 7. I can also look at it as 10 minus 3, and that is 1 Rekhank 3. So, this number 1 Rekhank 3 also has the value of 10 minus 3, which is 7. But this is the alternative form. 7 अंक को, 7 के अंक को हम 1 रेखांक 3 के रूप में भी देख सकते हैं. And if we use this approach, multiplication tables, we saw पहाड़े बहुत आसान हो जाते हैं, because you never need to operate more than digits of 5. And for transforming from the normal numbers to vinculum numbers, we can use Nikhilam Sutra. Nikhilam Sutra is Nikhilam Navtah Charmam Dashtah, all from 9 and last from 10. हर एक अंक को 9 में से घटाना है और अंतिम अंक को 10 में से घटाना है, और जो पूर्व अंक है उसका हम एक आधिकेन कर देते हैं. राइट. आज हम देखेंगे इसी निखिलम सूत्र से नंबर्स विच आर वेरी क्लोज टू द बेस, आधार के जो पास हैं नंबर्स, उनको बहुत ही आसानी से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. Let's take one example. We have two numbers (97 and 96). We want to multiply them. Now they are close to the base. इनका आधार क्या है, किसके पास है ये? 100. So we use the Nikhilam Sutra and obtain the Purak of this, complements of these. So Sutra says Nikhilam Navtah Charmam Dashtah, all from 9, last from 10. So 9 minus 9 is 0, right? Yes. And 10 minus 7 is 3. Similarly, 9 minus 9 is 0. And last from 10, 10 minus 6 is 4. Now, because they are smaller than the base 100, इसे छोटे हैं 100 से, तो इसलिए हमने माइनस का साइन रखा. अगर ये बड़े होते तो प्लस साइन हो जाता. ओके. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई ओनली दिस नंबर विद दिस नंबर, ओनली द डेविएशन.
97 को 96 से मल्टीप्लाई में करने में बहुत सी एफर्ट लगती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट मल्टीप्लाइंग 3 with 4 is easy. So 3 4s are 12. So this is half of our answer. How do I get this? Multiply this deviation with this deviation. So 3 multiplied by 4 is 12, and both are negative, so I get plus sign, and this is half of my answer. उत्तर का लेफ्ट साइड निकालने के लिए हम कोई नंबर ले लें, 97 लिया मान लीजिए, इसमें हम दूसरे अंक जो संख्या है उसके डिविएशन को जोड़ देंगे. तो 7 minus 4 is 3. 9 minus 0 is 9. 9. Right? Yes. This is one way of doing it. I can also get the same answer by adding to this number this deviation. So 6 when added to minus 3 gives me 3. ठीक है? Yes. और 9 में जब हमने माइनस 0 जोड़ा 9 आ गया. सो लेफ्ट साइड निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हो गए. इसमें ये जोड़ दीजिए विद साइन, और इसमें ये जोड़ दीजिए. Right? Right, sir. Let us see. For getting the left hand side, you have still more choices. अगर हम इस नंबर में ये जोड़ें डिविएशन में सिर्फ, so 3 plus 7 is 4 with a minus sign, I get minus 7. And if you add minus 7 to 100, you get 93. 100 minus 7 is 93. 93. If I add these two numbers, I also get 193. 7 plus 6 is 13. 9 9 18 plus 1 is 19. So you remove the base, you again get 93. So to get the left hand side, उत्तर का आधा लेफ्ट साइड का आंसर निकालने के लिए we have 4 methods of finding out. How much choice you have? Tremendous choice you get, right? Now once you get this by any one of these methods, this is left half of the answer and this is right half of the answer. The total answer is 9312. Right? 9312 इसका उत्तर आ गया. और आप देखिए निखिलम मेथड से हमने सिर्फ 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया है. 3 4s are 12 और बाकी सिर्फ हमने जोड़ने से या घटाने से ही हमारे पास पूरा उत्तर आ गया है, पूरा हमारा काम हो गया है. Right? So this is the Nikhilum method of multiplying numbers, and by using the Nikhilum method of multiplying numbers, जो numbers base के पास हैं उनको हम बहुत ही easily और conveniently कर सकते हैं. Let us take another example. मैं 87 को 98 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं. Now 98 is very close to the base of 100, right? Yes, yes, So Nikhilum method will be very convenient. वही निखिलम सूत्र यूज करेंगे डिविएशन लिखने के लिए. 9 minus 8 is 1 and last from 10 minus 7 is 3. 3
with a negative sign. 98. Now 9 minus 9 is 0 and 10 minus 8 is 2. So minus 13 is the deviation of 87 from the base of 100. Minus 2 is the deviation of 98 from 100. क्योंकि 98 100 से 2 छोटा है और 87 87 की संख्या 100 से 13 छोटी है. अब हमें सिर्फ, अब निखिल मेथड क्या कहता है, सिर्फ इसको इससे गुना करो. तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 26 आ गया. आधा उत्तर आ गया आपका. राइट. अब 87 में अगर मैं -2 जोड़ता हूं तो 7 minus 2 is 5. -2 9 नहीं आएगा. साइन का ख्याल रखना है. 7 minus 2 is 5. 8 minus 0 is 8. So 8 5 2 6 is my answer. Right? Yes. Again, let us see the choices. I can use this and add to this also. So 8 minus 3 is 5. 9 minus 1 is 8. I get the same left side. Add this to this, 13 plus 2 is 15. So minus 15, 100 minus 15 is 85. Right? Yes. Third method of getting this. Fourth method, add these. 8 plus 7, 15. 9 and 8, 17 plus 1, 18. And leave this base of 1, you get 85. Now let us see some examples of the positive numbers which are bigger than the base. The first number is 13 to be multiplied by 11. Now 13 number is 3 more than the base of 10, right? And 11 is 1 more than the base. Now they are bigger than the base, so they will come with a positive sign, right? Now 3 ones are 3 is our right side of the answer, and 13 plus 1 or 11 plus 3 gives us 14. अब यहाँ पर क्योंकि बेस से बड़े हैं दोनों संख्याएं 11 और 14, तो इसलिए प्लस साइन है, और जब हमने 13 में 1 जोड़ा प्लस 1 ऐड किया तो वी गेट 14, और 11 में 3 जोड़ेंगे तो भी प्लस 14 आ जाएगा. दूसरी चॉइसेस को भी अगर देखें तो वी गेट 3 प्लस 1 4, और 14 में 10 में ऐड करते हैं बेस में, वी अगेन गेट सेम 14. After discussing the one example of multiplying 11 with 13, let us take now an example of more number of digits with the help of the slide. Let us see, we want to multiply 10,010 with 10,101. These numbers are very big and we have base of 10,000. So the first number is 10 more than the base, and second number is 101 more than the base. So we write plus 10 plus 101 in front of this. Now we multiply only 10 with 101.
and we get 1010. Okay. For left hand side, you take any number, add the deviation of the second number as before. Now deviation is positive, so the result will be positive, and we will be adding. So to 10,101, when I add 10 more, I get 10,111 as the left side of the answer. So our total answer is obtained by just multiplying 10 with 101 and simple addition. हमें यहाँ पर सिर्फ 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ा है. That means just putting another 0, right? Now let us take this example of multiply 1099 with 1001. 1099 multiplied by 101. Now deviation is plus 99 and plus 1. Now 99 multiplied by 1 is again 99 we get, but please see here the base is 1000. So there are 3 zeros in the base, and therefore we will have 3 digits on the right side. This we have to be careful. Whatever is the base and the number of zeros in the base, we will keep digits equal to the digits in the base, right? If we get only one digit here, we will put 0 like here. 98 is 2 less than the base, so we wrote it as 02. And supposing we get by multiplying 3 digits, the extra digit will be carried. ठीक है? तो जितने आधार में शून्य हैं उतने ही डिजिट्स हमें राइट साइड में रखने हैं, दाईं ओर रखने हैं. जो अतिरिक्त डिजिट्स होंगे वी कैरी देम टू द लेफ्ट हैंड साइड. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. वी वांट टू मल्टीप्लाई 985 with 995. Now let us see the transfer the slide. And 995 we see is 5 less than the base, and 985 is 15 less than the base. So if 5, when you multiply with 15, 15 5 is 75. Again our base is 1000. 1000 में 3 0 हैं, so we write as 075, और 985 में से -5 किया, we get 980 as the left side. So our total answer is 980075. This is our total answer. Now like this we see that by using the Nikilam method we can multiply very easily, very conveniently, those numbers which are closer to the base. यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा. इवन भास्कराचार्य जी की लीलावती आप पढ़ें. लीलावती we should remember is Bhaskaracharya's treatise on arithmetic. So when he gives us multiplication methods, Bhaskaracharya says he gives us 6 methods of multiplying. 6 अलग अलग विधियां भास्कराचार्य हमें गुना करने की बताते हैं. And in the beginning he says you can work from right to left or left to right. Scientific applications में, टेक्निकल एप्लीकेशंस में लेफ्ट टू राइट वर्किंग बहुत महत्वपूर्ण है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि बाईं ओर का जो डिजिट आता है दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड दैट वी ऑब्टेन फर्स्ट डायरेक्टली. So this is a great advantage, and we will see further that with Vedic maths the working requirement, the effort required
is always reduced to the minimum essential level. Unnecessarily हमें कोई भी लेबर करने की, वर्क करने की आवश्यकता नहीं रहती है. जो भी हमें करना है उसमें जितना मिनिमम एसेंशियल एफर्ट है उतना ही करना पड़ता है. And we saw by using vinculum, if you go and use the Vedic methods, you need to remember table of only 5 5s are 25. Because 9 I can look as 10 minus 1, 7 I can look as 10 minus 3. So therefore, multiplication you can reduce only up to 5 5s are 25. So it makes it very easy, and learning Vedic maths is experience of joy, and it becomes a game because you have many choices. Other features of Vedic mathematics we shall see in our next lessons.